Assalamu alaikum. So I welcome you all in my channel, and today we will be talking about chapter number 3. And you know that we have started a test series. इसमें हम chapter wise बात कर रहे हैं different important questions के बारे में, और total हमारा test होता है 30 marks का। 60 मिनट है आपके पास इस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। और जिस चैप्टर के बारे में आज हम बात करेंगे वो चैप्टर 3 है, विच इज कंडीशनल लॉजिक्स, right? So again, first is you have objective section. Objective section में आपके पास 4 objective marks हैं, 4 objectives हैं, MCQs which you have to solve, and definitely cutting, overwriting, filling 2 or more bubbles is actually resulting in 0 marks in that question, and you have to attempt all the questions. It means you cannot leave any questions blank. So the first question is, there are blank control statements in C language. How many control statements we have in C languages? First you need to understand that what is control statement. So for control statement basically हमारे पास होती है the flow of program execution is controlled through control statement. There are some statements, there are some logic, there are something which is called control statement जिनके through हम लोग को जो है we can control the flow of program. Right, so there are 3 types of control statements. We have conditional logic selection statement and repetitions control statement. So the option B is correct option. Second question, in if statement what happens if condition is false? So if statement जैसे कि हमने पढ़ा है इन selection statement में हमारे पास एक if statement होता है, case statement होती है, there are multiple things as well. So if statement में क्या होगा if condition is false? क्या प्रोग्राम क्रैश करेगा और इंडेक्स आउट ऑफ द बाउंड का एरर आएगा और फर्दर कोड एग्जीक्यूट होगा, या कंपाइलर आस्क्ड टू चेंज द कंडीशन? So we know that if something similar like happens, that if condition will be false, so further code will be executed, right? Program will not be will not be crashed, index out of bound का error नहीं आएगा, compiler ये भी नहीं कहेगा कि you have to change the conditions, right? So if conditions will become false, further code will be executed. Maybe else condition है तो वहां पर चले जाएंगे, अगर else condition नहीं है तो सिंपल हम लोग जो rest of the instructions होंगी, sequence of instructions, we will be following that instruction. So second point, option C is the correct option. Question number 3, according to the blank, all the statement has been executed in the given sequence. So वो कौन सी ऐसी चीज होती है जिसमें हमारे पास तमाम इंस्ट्रक्शंस को हम लोग एक सीक्वेंस इन अ गिवन सीक्वेंस वी यूज टू एग्जीक्यूट? क्या वो लूप स्ट्रक्चर होती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, सीक्वेंस स्टेटमेंट होती हैं, या सिलेक्शन स्टेटमेंट होती हैं? सो इफ यू विल जस्ट फोकस ऑन द वर्ड्स, सो लूप में हम लोग वो चीजें लिखते हैं यूजुअली विच वी नीड टू रिपीट अगेन एंड अगेन. कंडीशनल स्टेटमेंट्स में देयर विल बी सम कंडीशन, बेसिंग ऑन द कंडीशन हम लोग उनको एग्जीक्यूट करते हैं. देन सीक्वेंस स्टेटमेंट, some sequence will be executed, right? And selection होगी on the basis of condition. So the correct option is sequence statement, because they are asking that वो कौन सी condition होती है जिसके through हमारी तमाम जो statements हैं वो एक sequence में execute होती हैं. So the correct answer is C. Question number 4. The set of multiple instructions enclosed in braces is called a box, list, block और job. एक मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को सेट ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को जब हम लोग ब्रैकेट्स में इंक्लोज कर देते हैं तो उसको हम लोग ब्लॉक कहते हैं. लिस्ट नहीं कहते, बॉक्स नहीं कहते, जॉब भी नहीं कहते. इनफैक्ट वी यूज टू कॉल इट ब्लॉक, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर आवर ऑब्जेक्टिव पोर्शन. इंशाल्लाह जब मैं when I'll be working on making complete important questions about chapter number 3, तो मैं और भी MCQs आपके साथ शेयर करूंगी. This is just a test. I actually focused on making this test of around 30 marks, so that's why मैंने सिर्फ 4 ही MCQs आपको दिए. So next is subjective portion. Subjective portion में हमारे पास short questions हैं first, and we have just 5 question और 5 के 5 ही आपको करने हैं. There is no option, there is no choice. So the first question is, what is conditional logic, right?
So इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यूजुअली बच्चों को इसका आंसर आता होता है बट दे आर अनएबल टू डिफाइन दैट हाउ दे विल डिफाइन दिस कंडीशनल लॉजिक. So conditional logic basically refers to a programming concept that enables a program to make decision or take specific actions based on a certain condition or criteria. राइट. बेसिकली ये आपको सिर्फ इनेबल करता है प्रोग्रामर को टू मेक डिसीजन ऑन स्पेसिफिक कंडीशन. जैसे हम इफ कंडीशन लिखते हैं, इफ दैट कंडीशन विल बी ट्रू, तो हम लोग कुछ कंडीशंस कुछ समथिंग विल हैपेंस. इफ दैट कंडीशन विल बी फॉल्स, समथिंग एल्स विल हैपेंस. सो इट्स जस्ट अ concept that enables program to make decision or action based on a certain conditions. It allows the program to evaluate different conditions and execute different code blocks accordingly, right? So we have different kind of conditional logics in our C language: if else, if, switch, case statement, and a lot of others as well. So next is define nested selection structure. As you know that nested is something within something. So when you will write down selection structure within selection structure, this will become a nested selection structure. So all those selection statements or selection structure within selection statement structures are called nested selection structure. Next question is what it meant by condition in C language. So it's again a very difficult, or you can say difficult to describe question. It's not difficult. It's not. It's actually very easy, but sometimes you students got confused that अब condition को कैसे define करें, right? So basically, condition could be any valid expression, including arithmetical expressions, relational expression, logical expressions, or a combination of these. So condition हमारे पास basically any valid expression which is कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है, उसमें रिलेशनल, लॉजिकल और इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, एज यू कैन सी ओवर हियर एज वेल, राइट. दिस इज वन ऑफ द कंडीशन जिसमें मैंने डिफाइन किया हुआ ए इज ग्रेटर देन 20 एंड बी लेस देन 20. So I have used relational and logical expression together to form a condition. So this is one of the example of conditions. Next, question number 4, define general structure of if-else statement. So the general structure of if-else statement is that first you will define, let's say, if condition, okay, this is your condition. If this condition will be true, then some statement will be executed. It can be block of statement and it can be anything else, then else, and then so this is the general structure of if else condition. First there will be if के साथ हम एक condition specify करेंगे, on the basis of the condition this block of statement will be executed. If this condition will become false, तो हम लोग directly else part में चले जाएंगे and then this statement of will be else statement will be executed. So this is the answer of this question. Okay, so the next question is write down output of the following. So here is a code we have to find out the output of the code. So let's just start with void main. Here we have two variables, int a equals to 7 and b equals to 10, right? और यहाँ पर हम लोग a equals to a plus b. So these are two lines. We know that we used these two lines for comments. So यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो रही है? A plus b 17. Then there is a condition if a is greater than 20. A is greater than 20? No, because a is equals to 17. Then we have used and condition. Okay, b is less than 20. So इस condition में हमारे पास b is less than 20. This condition is true, but on the other side this condition is false. So if we have
एक ऐसी कंडीशन हो जिसमें हमारे पास ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, यानी कि एंड के एक साइड पे ट्रू दूसरी साइड पे फॉल्स हो, तो ओवरऑल इसका आंसर हमारे पास फॉल्स ही आएगा, बिकॉज दिस इज द यू कैन से द कंडीशन ऑफ ट्रू एंड स्टेटमेंट्स के हमारे पास एंड जो ऑपरेटर होता है वो तभी हमें ट्रू देगा जब हमारे पास दोनों साइड्स पे उसके ट्रू होगा। सो अभी के लिए ये कंडीशन फॉल्स है। I'm not going inside. I'm just going to execute print statement, which is a equals to something, a की वैल्यू 17 है तो 17 आ जाएगा, कोमा b equals to 10. So this is the output of my this code, right? Next is, what is control statement? How many types of control statement provided by C language? So as we have already talked about control statements at the start of the instruction, at the start of this code. So let me tell this again. Control statement is basically the statements which will control the flow of program execution, right? वो वाली statements जो कि control करती हैं program का flow. This is called control statement. So we have three types of control statements. कौन कौन सी होती हैं? Selection control statement, sequential control statement, and repetition control statement, right? So the selection statement जो हमारे पास है उसमें on the basis of some condition like if, selection, if, else, selection, इसके आगे आप स्ट्रक्चर, इनकी सारी डिटेल्स यू कैन डिफाइन इट बाय योरसेल्फ। सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स में जिस भी तरीके से आपकी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी वो उसी तरह से एग्जीक्यूट होंगी, राइट? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिपीटेशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। सो रिपीटेशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं इट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस, ऑन द बेसिस ऑफ लूप्स, राइट? रिपीटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आपके तमाम इंस्ट्रक्शंस जो है वो जितनी दफा भी आपने लूप में डिस्क्राइब किया होगा इट्स गोइंग टू बी रिपीट ऑन दैट टाइम, right? So this is these are three types of conditional statements, right? Please don't forget to mention if else, nested if else structures. Okay, आपको इन सब के structure आने चाहिए which you have to specify. Instead of giving the examples of all these things, instead of writing too much information, आपको सिर्फ अगर आप structure भी उनके correct लिख दोगे तो you will be getting all the marks, right? So 2 marks होंगे आपके कंट्रोल स्टेटमेंट के, रेस्ट ऑफ द 6 मार्क्स आपके पास ये जो हमारे पास 3 टाइप्स के कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं उनके 2 मार्क्स आपके होंगे। 2 मार्क्स फॉर सिलेक्शन स्ट्रक्चर, 2 मार्क्स फॉर सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर है, 2 मार्क्स फॉर रिपीटेशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। इन केस आपने इनमें से किसी एक को भी मिस कर दिया है सो डेफिनेटली यू आर लूजिंग 2 मार्क्स। So the next is, write a program that take percentage marks of students as an input and display his grades, right? So ये एक ऐसा program है which is quite easy but every time students got confused, right? So इसमें आपको करना क्या है? They are asking write a program that take percentage marks of students as an input. So आपके पास input क्या होगी? Percentage marks of the students, यानी कि जो भी students के marks हैं उसकी percentage होगी and display his grade, और उसके grades हमको display कराने हैं on the basis of condition जो एक criteria यहाँ पर दिया गया है। So simply first we are going to take, I'm just going to write down a pseudo code here. First you are going to take input. First step क्या होगा आपका? Take input
percentage, right? Then you will be comparing that percentage. If percentage is greater than equals to 80%, राइट? तो आप एक नया वेरिएबल बनाओगे, बल्कि वेरिएबल्स हम लोग यहीं पर बना लेते हैं। स्टेप 2 डिफाइन करते हैं, डिफाइन ग्रेड variable, and we know that variable will be having only one value, one character. So ये जो होगा वेरिएबल, ये 4 डेटा टाइप का होगा, राइट? तो फिर हमने क्या किया, ग्रेड को वैल्यू दे दी a, else if, again we are writing else if. Why we are writing else if? Because we have another condition to check, that if percentage is greater than equals to, अगर परसेंटेज हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 70% से, तो हमारे पास ग्रेड क्या होगा, ग्रेड विल बी बी, राइट? अगेन वी आर गोइंग टू डिफाइन अ कंडीशन एल्स इफ percentage is greater than equals to 60%, तो हमारे पास ग्रेड क्या होगा, grade is going to be C, right? So please don't forget these are all, E is actually small, right? As if percentage is greater than equals to 50%, then grade equals to D, right? And below 50, all the below 50 is grade is F. Okay, so see, actually हम यहाँ पर input भी ले ही लेते हैं. Okay, so let's just define variable float percentage variable and char grade. ओके, ये मैंने 2 वेरिएबल बनाए हैं, फ्लोट एंड परसेंटेज. डोंट फॉरगेट दैट ऑल द रिजर्व वर्ड्स जैसे भी होते हैं लैंग्वेज में, उनको उसी तरह से लिखा जाता है. मीन्स चार will become C should be small, F float means F should be small, right? So अभी हम इनपुट लेते हैं यूजर से, एंड वी नो दैट हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर. printf enter the percentage of marks, right? And how can I take input from the user in C language? scanf use करते हैं for taking input from the user, और I know that I have to store input in percentage, और percentage float variable का है, और for float का format specifier modulus f होता है, right? So that's why I have written this. I hope it's clear. Okay, percentage, I'm done. Don't forget to write down format specifier, escape sequences, and then मैंने conditions लिखी हैं, all the conditions I have specified. Okay, and void main, and here my after else part, my main statement will be finished, and dash include stdiu.h. I hope you are pretty much clear that why I have included stdiu, because
standard input output header file, because I will be using scanf and printf function. That's why I have defined this stdio, right? So that's it for this question. Okay, 2 marks आपके पास होंगे for taking input. 1 mark is for 2 mark is for defining the variables, right? 2 mark is for taking input, and rest of the 4 marks are basically defining these 4 conditions, right? So that's it. In this way you can get full marks in this question. So basically ये बहुत आसान question है. You just have to describe, you have everything is given over there, you have to find out the solutions. Input लेना है तो input कैसे लेते हैं, you should know that we take input through printf and scanf. Conditions कैसे specify करते हैं. I hope it's clear. If there is any confusion, please do let me know in the comment section box. I will be happy to answer your question. Take care. Allah Hafiz.